In the early days of the railroad, train rails were made of either cast iron or wrought iron. Cast iron was too brittle and would break easily. Wrought iron was too soft and would wear out too quickly. So steel eventually became and remained the train rail metal of choice. The train wheel's rim runs on the inside of the rail to keep the train on the track. This plant makes train rails entirely out of recycled steel from scrap yards, food cans, and recycled pieces from the rail-making process itself. Electromagnets pick up the scrap and dump it in a charging bucket. A truck hauls the bucket inside, where a crane drops the contents into a furnace. An intense electric current melts the scrap steel at 1650 degrees Celsius. It then flows into a large brick-lined ladle, where they add carbon, manganese, and other elements to make the steel more durable. The alloy then runs down a ceramic tube that shields it from exposure to oxygen, which would ruin the metal. From there, the molten metal flows into molds which extrude it into continuous rectangular blocks called blooms. Acetylene torches cut each bloom into 3.5-meter lengths. A crane then transfers the blooms to a furnace, which, over the next 5 to 7 hours, reheats them to 1250 degrees Celsius. This softens the steel for further shaping. Then the reheated blooms enter a machine called a rolling mill, which elongates each bloom more than quadrupling its length. A shear then slices the longer, thinner blooms into 4 pieces. The pieces now go into another furnace for reheating. This preps them for the next set of rolling mills, which will gradually form them to the final rail shape. Different railroads used to use different shaped rails, which required changing the train's wheels when passing from one railway to another. By the turn of the 20th century, the T-shaped rail became the industry standard and remains so today. For the final shaping, each steel rail passes several times through 3 consecutive mills. This is what a mill's rollers look like. And here's the standard T-shape to which they form the steel. Next, a saw slices off about 30 centimeters to square off the ends. The cut-off pieces go back to the scrapyard. Meanwhile, the rails are laid out until they cool to about 500 degrees Celsius. Then an electromagnet piles them in a holding box, where they sit for 10 hours until they cool to about 90 degrees Celsius. When they come out of the box, they run through 2 sets of rollers. The first set flexes the rail vertically. The second, horizontally. This flexing process straightens out the rails, which curved slightly due to all that heating, shaping, and cooling. Next, each rail passes over a mirror, enabling inspectors to examine the bottom as well as the top. Finally, a saw cuts the rails to whatever size the railway ordered, most often the standard length of 25 meters. The Quality Control Department measures random samples to make sure all the dimensions are precise. Every rail bears a number identifying the batch of steel from which it came. In the event of a problem, that number lets them trace all the rails made from the same batch. It's a system that ensures a safe, smooth ride. Thực
सारी चीज़ें बताएंगे जिस प्रोसेस से यह पटरियाँ बनती हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम आपको एक स्टील प्लांट में बनती हुई इन रेल पटरियों को पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। पटरियाँ जिस स्टील से बनती हैं उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.6 से 0.8% रहता है और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम धातु भी रहता है। यह स्टील जब बनता है तो पिघले हुए रूप में गर्म लावा के समान दिखाई देता है। इस मॉल्टन स्टील को कास्टर, जो कि एक मोल्ड की तरह होता है, उसमें डालकर सॉलिड शेप में लाया जाता है। रेल ट्रैक बनने के लिए जो सॉलिड शेप स्टील बनाया जाता है उसे ब्लूम कहा जाता है। इस इमेज में आप ब्लूम बनते देख पा रहे होंगे। यह ब्लूम रियलिटी में बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इन्हीं ब्लूम से आगे रेल ट्रैक बनाए जाते हैं। इन्हें पहले मैग्नेटिक क्रेन्स के माध्यम से उठाकर पहले फर्नेस में डाला जाता है। इस फर्नेस को रीहीटिंग फर्नेस कहा जाता है। इसे रीहीटिंग फर्नेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लूम को लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है ताकि इसे आसानी से रेल ट्रैक का शेप दिया जा सके। फर्नेस में विभिन्न गैसों को जलाकर ब्लूम को गर्म किया जाता है। फर्नेस से जब यह ब्लूम निकलते हैं तो रेड हॉट दिखाई देते हैं। इस रेड हॉट ब्लूम को बहुत से स्टैंड्स के बीच से कई बार पास कराया जाता है और इन्हें रेल ट्रैक के शेप में लाया जाता है। इन स्टैंड्स में इस तरह के खांचे वाले रोल्स लगे होते हैं। रेल ट्रैक के शेप में आने के बाद इन्हें डिज़ायर लेंथ में हॉट सॉ की मदद से काटा जाता है। जिस प्लांट का यह वीडियो है वहाँ मेनली 2 तरह की लेंथ में ट्रैक को कट किया जाता है। पहला 13 मीटर जिसे शॉर्ट रेल कहा जाता है, दूसरा 72 मीटर जिसे लॉन्ग रेल कहा जाता है। और फिर यहाँ से शॉर्ट रेल का व लॉन्ग रेल का दोनों का पार्ट अलग अलग हो जाता है। हॉट सॉ से कटिंग को पास से भी दिखाया गया है। शेप के टेस्टिंग के लिए बीच बीच में सैंपल के रूप में भी हॉट सॉ की मदद से सैंपल को कट किया जाता है और सैंपल के शेप को मेजर करके पता लगाया जाता है कि ट्रैक्स सही शेप में बन रहे हैं या नहीं। शॉर्ट रेल्स के बनने के बाद इन्हें कूलिंग बेड में पहले एक मैकेनिज्म से पलट कर सीधा किया जाता है। फिर इन ट्रैक के कुछ ठंडा होने के बाद इन्हें मैग्नेटिक क्रेन से उठाकर शिफ्ट किया जाता है। इस रेड हॉट कंडीशन में मैग्नेटिक क्रेन से यह रेल ट्रैक लिफ्ट नहीं होगा क्योंकि स्टील का मैग्नेटिक टेम्परेचर 678 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए कूलिंग बेड में इन्हें कुछ देर ठंडा किया जाता है। इन रेल्स की शिफ्टिंग के बाद इन्हें सीधा किया जाता है स्ट्रेटनिंग मशीन से, क्योंकि ट्रैक्स बनने के बाद अपने आप बीच से बेंड हो जाते हैं। इनका कारण भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, पर वो किसी और वीडियो पर। ट्रैक को स्ट्रेट करने के बाद इनका इंस्पेक्शन और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी की जाती है और इसी के साथ शॉर्ट रेल्स बनने का सफ़र यहीं समाप्त होता है। पर लॉन्ग रेल्स बनने के बाद उन्हें सीधा करने के लिए प्री कैम्बरिंग प्रोसेस और स्ट्रेटनिंग मशीन से पास करवाया जाता है। स्ट्रेटनिंग मशीन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोल्स लगे रहते हैं जिनकी मदद से ये ट्रैक को सीधा किया जाता है। लॉन्ग रेल ट्रैक्स को भी सीधा करने के बाद उनका भी एनडीटी इंस्पेक्शन किया जाता है। टेस्टिंग के बारे में फुल डिटेल वीडियो चैनल में अपलोड कर दी जाएगी। ट्रैक्स के एनडीटी के बाद इन लॉन्ग रेल्स को फ्लैश बट वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़कर बहुत लंबी रेल तैयार की जाती है जो करीब 260 मीटर की होती है। इन लंबी पटरियों को बिछाने के लिए उस जगह ले जाने के लिए खास तरह के ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है जो कि इमेज में दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह स्टील प्लांट में रेल ट्रैक रेडी होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
In northern Minnesota, miners coax ore from the rocky veins of the Mesabi Range. Straight from the ground, this taconite is unsuited for AK Steel's productive blast furnaces. Pulverized and concentrated, the iron ore is fused back together as marble-sized pellets. Steel rails will guide the ore to its final destination at the base of AK Steel's blast furnaces. 600 miles away, under the hills of West Virginia, miners dispatch tons of coal to the surface. It travels by rail to AK Steel's plants, where it will become the primary fuel in the 4,000-degree inferno needed to reduce the ore to molten iron. Before the coal can begin the demanding task of smelting iron, it must be transformed into a more efficient form called coke. The process begins by loading a blend of coals into a series of tall, narrow ovens. The ovens are sealed from the air to prevent the coal from burning away in the 2,400-degree temperature. After baking for nearly a day, a 12-ton volcano of coke is pushed from the oven into an awaiting rail car. Reunited with oxygen, the coke ignites in a scorching dance. Like charcoal, the coke is now light, porous, and strong. A 9,000-gallon cold shower tempers the heated passion of the coke, sending a billowy plume of steam skyward. Completing the raw material list is limestone. Mined from quarries throughout the Midwest, this natural cleansing agent will collect the impurities released from the coke and ore. West Virginia coal, limestone from Kentucky, taconite from Minnesota, and a pinch of high-grade iron from South America. These earthly ingredients will ascend 20 stories to meet in the iron maker's colossal vat. Skip cars haul their carefully measured burden up the steep incline, delivering a steady supply of fuel and ore to the furnace. A pair of valves, called bells, allow the raw materials to enter the furnace without releasing the pressure of hot air and gases in the furnace. To our metallurgists, this giant structure is known as a countercurrent packed bed thermochemical pressure vessel, but simply the blast furnace is named for its most indispensable ingredient, a blast of air and gas hot enough to ignite the coke. Stoves heat the air to nearly 2,000 degrees. Turbo engines propel the hot air at nearly 200 miles per hour into the furnace through openings called twires. The porous coke allows the hot wind to penetrate the raw materials and heat the ore. Oxygen reacts chemically with the coke, creating a reducing atmosphere. This thermochemical process creates temperatures of more than 4,000 degrees. Under this intense inferno, the ore releases molten iron, which drips to the bottom of the furnace. Gases from the reaction are cleaned and recycled as fuel for the coke ovens and blast furnace stoves. The limestone traps impurities released from the burning coke and ore, becoming a slag which floats atop the heavier molten iron. The iron and slag flow almost continuously from two tap holes near the bottom of the furnace. A drill pierces the clay plug of the tap hole and bores into the heart of the furnace. A 2,700-degree river of molten iron is born from the belly of the furnace in a spectacular display of man's command of nature. Unleashed, the fiery tide follows its directed course beneath the watchful eyes of its creators. With respect for its fury,
the quality of the metal is monitored and recorded. The limestone, having performed its cleansing job, rides out of the furnace atop the river of iron. Diverted to a cooling pit, it will be recycled, perhaps as the bed of a new highway or railroad. Born of brittle, brute strength, the iron is destined for refining school, where it will learn to be rolled, drawn, and stretched as steel. Bearing more than 200 tons each, torpedo cars haul the molten iron to the basic oxygen furnace, where it will complete its transformation into steel. Poured into a ladle, the iron is treated and skimmed to remove slag containing sulfur, an impurity left over from the coke in the blast furnace. While the iron is being skimmed, scrap steel, recycled from elsewhere in the mill, is loaded into the furnace. Cleansed of sulfur, the molten iron is poured into the mouth of the furnace. In a pulpit 200 feet from the fiery metal, the furnace is rocked, stirred, and monitored with computer-assisted precision. High-purity oxygen is blown into the furnace at supersonic speed through a water-cooled lance. Like a giant cutting torch, the oxygen lance raises the temperature of the iron to nearly 3,000 degrees, burning off yet more impurities in the iron and melting the scrap. In some 20 minutes, the rage of the furnace subsides, having tamed the iron's brittle strength. Rid of excess carbon, phosphorus, and silicon, the metal has newfound power. Steel is born. Having harnessed the energy of the sun itself, AK Steel's metallurgical chefs keep sentry over their bubbling recipe. A sample from the molten bath is retrieved. In the shop's metallurgical lab, quality control technicians analyze and record the composition of the metal. Before it solidifies, final adjustments are made to the chemistry. A vacuum degasser removes additional carbon. This allows the steel to be drawn and shaped into such products as automotive parts. Special alloys, titanium, aluminum, and manganese, among others, add special qualities for hundreds of different uses. A lid insulates the molten brew during casting. Capable of lifting the weight of nearly 200 cars, the crane operator's delicate touch hoists the ladle 4 stories high. Atop the caster,